हेलो गाइस। तो बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम आ चुके हैं और आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और मेजरली आपके एमएसएन सेकंड और फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स 2 सब्जेक्ट हैं। तो पहले अपन बात करते हैं एमएसएन सेकंड की। एमएसएन सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है शॉर्ट नोट ऑन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एंड सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। थर्ड क्वेश्चन इज कि राइट अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन आईसीयू एंड फोर्थ क्वेश्चन शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली। पांचवा क्वेश्चन है एनलिस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड एनलिस्ट मैनेजमेंट ऑफ रीनल कैलकुलाई। नेम 2 टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। पूरा हियरिंग लॉस याद करना पड़ेगा। मेजर्स ऑफ प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग है यहाँ पे। Define burn, explain in detail pathophysiology of burn, explain the formulas for fluid calculation, discuss the management of patient with 40% of burn, name 4 symptoms of orchitis, define Meniere's disease, define opportunistic disease, describe differentiate between hyperventilation and hypoventilation, explain about national AIDS control program। 19वां क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द असेसमेंट ऑफ आई इन रेस्पेक्ट टू विजुअल एक्यूसिटी, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल फंक्शन एंड प्यूपिल फंक्शन। एंड 20वां क्वेश्चन है लिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ हर्निएटेड डिस्क। 21 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन साइनोसाइटिस। 22 है शॉर्ट नोट ऑन फिमोसिस। 23 नंबर का क्वेश्चन है राइट रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। 24 क्वेश्चन है डिफाइन सिलिकोसिस। 25 शॉर्ट नोट ऑन ब्रेस्ट कैंसर। ये ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। राइट ब्रीफली ऑन लिपोसक्शन। लिस्ट out the upper respiratory tract infection है। explain types of cancer। 28 क्वेश्चन है describe type of disaster, define cataract and causes and risk factor for cataract, nursing care plan for cataract and pathophysiology and clinical manifestation। क्वेश्चन नंबर 32 एक पेशेंट है जो मेडिकल वार्ड में एडमिटेड है and diagnosis of hemiplegia and answer the following, define hemiplegia। and 33 question है a patient is admitted to surgical ward with diagnosis of renal failure। तो अपन को define renal failure and types of renal failure, list out the causes and clinical manifestation and describe the pathophysiology and NCP for renal failure। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन बात करेंगे फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी में अपन डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। शॉर्ट नोट ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। थर्ड क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। फोर्थ क्वेश्चन है एनलिस्ट एडवांटेज ऑफ पेरिनेटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। एनलिस्ट एडवांटेज ऑफ प्रीनेटल
route administration of drug. Write about drug therapy for peptic ulcer disease. Write role of nurse in drug administration. Define product. Short note on insulin therapy. Short note on antiretroviral therapy. And list 2 uses of atropine. Name any 2 drugs used in epilepsy. Short note on bronchodilator. Name any 2 anticoagulant drug and list indication of hydrocortisone. Describe diuretic. Explain classification mechanism of action, adverse effect, and contraindication of the diuretic in details. Short note on oral contraceptive and hormonal replacement therapy. Short note on iron and vitamin K supplement. Short note on antipyretic, antidepressant. 19वां क्वेश्चन है लिस्ट आउट द emergency drug which are used in CPR and write mechanism of action, adverse effect, indication and contraindication in detail. List out the drug used in topical application for ear. What is drug addiction and write briefly on therapeutic uses of beta blocker drug. Write briefly digitalist therapy. Write briefly toxicities of aminoglycoside and management of amoebiasis and what is drug dependence. Short note on teratogen, antiemetic and phenytoin sodium, protamine, and write down the factors affecting drug absorption and enumerate the first pass metabolism and write on the role of tablet captopril in hypertension and treatment of UTI and classify non-steroidal anti-inflammatory drugs मतलब NSAIDs and write about the classification, indication and nursing implication for oral hypoglycemic drug. Then next अपन बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स की. तो सबसे पहले अपन पैथोलॉजी की बात करते हैं. तो पैथोलॉजी में पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन CSF एग्जामिनेशन. डिस्क्राइब यूरिन एनालिसिस and what is peptic ulcer and short note on peptic ulcer. What is gangrene and explain its type. Describe thrombosis and embolism and write pathophysiological changes in tuberculosis. Define malignant and benign cancer growth. Explain acute inflammation and chronic inflammation. Explain semen analysis and write pathophysiological changes in myocardial infarction. Short note on wound healing. Define necrosis and its type. Write pathophysiological changes in pneumonia. अब अपन बात कर लेते हैं जेनेटिक्स की. Explain about Down syndrome. Describe the infertility. Explain method of sex determination. Short note on mutation. Describe patterns of inheritance. Explain inborn error of metabolism. Write a short note on genetic counseling. Explain about DNA and RNA chromosome. Define Human Genome Project. Explain role of nurse in genetics. What is perinatal diagnosis and testing. Short note on dysmorphism.